I'm Gopal Anand, the banker's Adda.com capsule maker. The same capsule which helps you out in getting good scores in general awareness portion of different examinations like SBI PO and IBPS. To help you out in the general awareness portion, I am coming with my e-learning course in which I will be teaching you banking awareness and static awareness of Indian states and union territories. Hello students, I'm Swati and I've been helping you out in preparing computer awareness for various banking examinations. Yes, computer is a very vast subject, and to help you out in understanding what to study and how to score, I've created an e-learning program for computers. We all are worried about reasoning, the level of questions and moreover the surprises. So here I have compiled a package especially for banking reasoning which will deal with every level from basics to higher levels. We have devised a unique e-learning courseware for you to overcome all the hurdles and crack your upcoming examinations. This courseware does not only consist of the previous year asked questions but also the questions based on new patterns. Quantitative aptitude. Difficult to understand so many concepts? Let's make it easy. Here I am, Sumit Verma. I have designed a course in which you will be able to understand all the concepts and all the types of questions. The Bank Power module includes 100+ hours of high-quality videos by our expert faculties, tricks and shortcuts to solve questions in a faster way, e-books for subjects Maths, English, Reasoning, General Awareness and Computers, online test series with all India ranking and detailed solutions, online and face-to-face doubt clearing sessions, available preloaded on a tablet or SD card. Go to youtube.com and subscribe to the Adda247 channel. Scroll through videos and playlists. To get notification on new videos uploaded, press the bell button. Adda247, government job in your pocket. Hi friends and welcome to the Hindu editorial analysis. वेल आप लोग जानते ही हैं कि आजकल बहुत कुछ चल रहा है हमारी कंट्री में, देयर आर वेरियस थिंग्स, बट बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि हमारी कंट्री के साथ साथ जो हमारे इंटरनेशनली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हम लोग उन पर भी पकड़ बना के रखें. ओके माय डियर फ्रेंड्स, सो टुडे वी हैव गॉट टू एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग टॉपिक्स. वन वुड बी अराउंड दैट कैटल बैन बाय बेसिकली तो कैटल का जो यूज़ है, जो लाइफ स्टॉक का जो यूज़ है, उसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, सो देयर आर सम चेंजेस रिगार्डिंग द लाइफ स्टॉक, द selling and buying of livestock which has been affected by the central government. And except that, something is going on in Brazil, right? So something really wrong is going on with the political class of Brazil. So what exactly is the problem? In fact, what's the problem with Brazil's political class? So we'll have an analysis of both of these articles from today's The Hindu Editorial, and we'll also take a look at the other articles of today's Hindu Editorial. And also, we are going to practice lots of comprehension-based questions, learn new vocabulary words, and also practice a massive para jumble today. So guys, are you ready for the Hindu editorial analysis? And yes. Well, let's take a look at the first slide. Now, today's first article is all animals are equal. तो भाई आज का जो पहला आर्टिकल है वो यही है कि हर जो जानवर है वो बराबर है, all animals are equal. अब ऐसा क्यों कहना चाहता है ऑथर? Let's take a look at the next slide. Now, the center's move to notify new rules to regulate livestock markets under the Prevention of Cruelty to Animals Act 1960 PCA is either extremely poorly thought out or much too clever for its own good. अब देखा जाए भाई तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने हाल ही में कुछ अमेंडमेंट्स किए हैं, कुछ नए रूल ऐड किए हैं प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट 1960 के वाले एक्ट में. और देखा जाए तो ऑथर का ये मानना है कि जो नए रूल्स लगाए हैं गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, वो बहुत ही बुरे किस्म का, ये बहुत ही स्टूपिड किस्म के रूल्स हैं, या देखा जाए तो उनको ठीक से प्लान नहीं किया गया है, So ultimately the center has recently made some amendments Prevention of Cruelty to Animals Act of 1960, and it has added some rules. Now, these rules, in the view of the author, are extremely poorly thought, ill-planned, or they are very stupid, and they are much too clever for its own good. All right. Now, let's move forward.
in a way, both on the surface, the notification, which spans or stretches 8 pages, reads like a general document on the regulation of the sale of all kinds of livestock, that's cattle, bought and sold in animal markets, with some welcome prohibitions on the cruelty inflicted imposed in the transport and treatment of animals. अब देखा जाए तो हम अगर थोड़ी ऊपरी बात करें, ऊपरी तौर पर अगर बात करें तो तकरीबन 8 पन्नों का यहां पर कह सकते हैं आप ये अमेंडमेंट हुआ है, 8 पन्ने हैं इस पर्टिकुलर अमेंडमेंट में। साथ ही में देखा जाए तो रेगुलेशन कैसा होना चाहिए, किस तरीके से जो मवेशी हैं कैसे उनको खरीदना है, कैसे उनको बेचना है, वो सब है। और साथ ही में कुछ अच्छे बदलाव भी हैं, ऑर्डर के हिसाब से कुछ अच्छे बदलाव भी हैं, खास करके ये देखते हुए कि ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे इन जानवरों के साथ जो ज्यादती होती है, जो इन पे अत्याचार होता है, उसके रिगार्डिंग कुछ अच्छे इंप्रूवमेंट्स भी हैं। ऑलराइट, यू नो, सो व्हेन वी टॉक अबाउट, इफ वी टॉक अबाउट इन ब्रीफ, यू नो, इफ वी टॉक इन ब्रीफ, देन दिस पर्टिकुलर अमेंडमेंट इज, यू नो, इट्स समथिंग दैट स्ट्रेचेस अराउंड 8 pages, and you know what, it deals in the regulation, it deals with the regulation of selling and buying of livestock or cattle, you know. And the thing is that there are some welcome prohibitions as well, some welcome limitations as well on the cruelty imposed or inflicted in the transport and treatment of animals. I hope itna dimag mein aapke baith gaya hoga. Okay, now okay, so Naman is saying, sir, can you crop your pic a little bit? अब देखते हैं भाई अगर रिक्वायर्ड होगा। यस, आई थिंक रिक्वायर्ड चीज कर दी गई है नाउ, बट पार्स और एनालाइज द रूल्स एंड इट इज एविडेंट और क्लियर दैट कैटल, अ कैटेगरी दैट इंक्लूड्स काउज, बफलोज, बुल्स एंड कैमल्स, कम अंडर अ slew or heap of special restrictions which when affected could have an extremely serious impact on the meat and livestock industry, not to mention the livelihoods and dietary choices of millions of people. अब देखा जाए भाई तो अगर हम प्रॉपरली एनालाइज करें जो बदलाव किए गए हैं, जो नए रूल्स आए हैं, अगर उनको हम प्रॉपरली एनालाइज करें तो बहुत ही साफ तौर पर एक निकल के आती है कि मवेशी जिनके अंदर आपके गाय भी आते हैं, भैंसे भी आते हैं, और कैसे आप सांड भी आते हैं और ऊंट भी आते हैं बेसिकली, तो इनके रिगार्डिंग जो है बहुत बड़ा नियमों का गुच्छा बना दिया गया है, बहुत बड़ा लिमिटेशन का गुच्छा बना दिया गया है। और ये जो लिमिटेशंस हैं जब ये असलियत में अप्लाई किए जाएंगे ग्राउंड पर, तो उससे जो मीट इंडस्ट्री है, साथ ही में जो कैटल की जो इंडस्ट्री है, बेसिकली आपका दूध उत्पाद भी आता है और बहुत सारी चीजें हैं, तो उससे जब ग्राउंड पे इफेक्ट होंगे ये रूल्स, तो उससे क्या होगा, लाखों लोगों पर उसका असर जाएगा। ऑलराइट, और काफी नेगेटिव किस्म से भी असर जो है वो जा सकता है। नाउ सो व्हेन वी हैव अ क्लोज एनालिसिस ऑफ द न्यू रूल्स एंड इट इज टोटली क्लियर दैट कैटल, अ कैटेगरी दैट इंक्लूड्स काउज, बफलोज, बुल्स एंड कैमल्स, कम अंडर, you know, a group of special restrictions or limitations which when affected could have an extremely serious impact on the meat and livestock industry, and you know, not to forget the dietary choices or the livelihoods of millions of people in our nation. Now, surprisingly, only the purchase or sale of cattle for slaughter in animal markets has been prohibited. अब देखा जाए भाई तो प्रोहिबिशन की अगर हम बात करें तो सिर्फ और सिर्फ जो खरीदारी या बिक्री है कैटल की स्लॉटर के लिए, यानी कि बेसिकली उनको उनका सर्कलम करने के लिए, या बेसिकली कह सकते हैं उनको मारने के लिए, तो एनिमल मार्केट्स में बस इस चीज की मनाही की गई है। सो यू नो, इट्स इन अ रियली स्ट्रेंज थिंग, ओनली द परचेज और सेल ऑफ कैटल फॉर स्लॉटर इन एनिमल मार्केट्स हैज बीन लिमिटेड और प्रोहिबिटेड। आई होप माय डियर फ्रेंड्स कि इतना आपके दिमाग में बढ़िया से बैठ गया होगा, और अगर बैठ गया है तो आप लिख भी सकते हो, बैठ गया सर। नाउ लेट्स टेक a look at question number 1. So, in author's opinion, the census moved to notify new rules to regulate livestock markets under the Prevention of Cruelty to Animals Act 1960. Now, what is the correct option from all of these options? So, tell me, my dear friends, the time starts now. Hurry up, guys. Quickly, 30 seconds. Just, okay, come on guys, hurry up, 20 seconds left. What's the answer? हर किसी को जवाब देना है. I want everyone to answer. 10 seconds left guys, quickly. Okay, so it's 3, 2, 1. Time's up. तो देखो भाई समय जो है वो समाप्त हो गया है. You can see a flood of answers over here and you know this is the kind of flood that I really love. Okay, अब देखो भाई क्या चीज है.
Now, before I move forward, I could actually see some people typing, sir, let's please explain more in English, more in English. अब देखो क्या है ना, on one hand you will type, sir, please explain more in English. On the other hand, if I start doing that, on the other hand, some people will type, please explain more in Hindi. So guys, I am maintaining a proper balance between English and Hindi, and I am sure that if you listen carefully, you will get the required explanation in your desired language. Okay, so in author's opinion, the center's move to notify new rules to regulate livestock markets under the Prevention of Cruelty to Animals Act 1960, well, option 1 is either extremely well thought out or much too clever for its own good. Well, no, that is wrong, my dear friends, because it is nothing like that was given in the slides. So option 1 is wrong. Option 2 says is either extremely poor thought out or much too clever for its own bad. No, it was not written like that. So option 2 is also wrong. I think a lot of people type 2. Well, my dear friends, all of you are wrong. Now option 3 is either nicely or poorly thought out. Well, this is not clear, it's very unclear. So option 3 is wrong again. Now option number 4 is either extremely thought out or much too clever for its own good. Well, is either extremely thought out. Now, did the author express it like that? No, my dear friends, he did not. So option number 4 is also wrong, which means option number 5, which says is either extremely stupidly planned or much too clever for its own good. Now, this was not exactly given, but definitely this is the closest to what was given in the previous slide, which means option number 5 is the correct answer. And all those of you who chose option number 5 right away from the beginning, you have done a good job, because that is the correct answer. मैंने देखा बहुत सारे लोगों ने अपना आंसर बाद में चेंज कर लिया, उनका सही नहीं माना जाएगा. वो लोग जो स्टार्टिंग से ही नंबर 5 पे लगे थे, they have done a good job, और उनको मिलता है 1 मार्क इसके लिए. I hope, my dear friends, that your account would have got opened and you would have scored 1 on 1 for sure. If it's not like that, no problem, my dear friends. 7 more questions coming up after this. Now, let's take a look at the next part of the article. So, now this raises suspicions that the center has attempted to conceal or hide or at least soften the perceptions about an extremely controversial provision in the guise or disguise of passing a seemingly inoffensive, even enlightened body of rules relating to animal cruelty. अब देखा जाए भाई, तो यहां पर ऑथर का यह मानना है कि सेंटर जो है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, वो उसकी इस मूव से ना इस बात की बहुत सारी सस्पिशन उठता है. बेसिकली इस बात बहुत सारे सवाल उठते हैं कि क्या जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो किसी पर्टिकुलर चीज को जो है छुपाने के लिए या उस अपने पर्टिकुलर एम को छुपाने के लिए इनफैक्ट इस नए सेट ऑफ रूल्स के भेस में लाकर अपना जो एक्चुअल एजेंडा है उसको इसके अंदर चुपके से जो है एकदम इनऑफेंसिव तरीके से जो है लगाकर पेश करना चाह रहा है. क्या मतलब बेसिकली पुराना एन ओल्ड थिंग इन अ न्यू पैकेज. ऑलराइट, क्या ऐसा कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट करना चाह रही है? नाउ द वे द थिंग इज द चेंजेस इन द सेट ऑफ रूल्स बाय द वे ऑफ दैट प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट. द चेंज ऑफ रूल्स एक्चुअली रेजेस सस्पिशंस that the central government is trying to hide or at least soften perceptions about an extremely controversial provision, by the way, in the disguise of passing of seemingly inoffensive, even enlightened body of rules relating to animal cruelty. Now, the rules framed for the sale of cattle are so cumbersome or awkward. For instance, buyers must verify that they are agriculturists and the seller must furnish photo identity proof and written declaration stating that the cattle are not brought to the animal market for slaughter. One wonders whether the objective is to surreptitiously or secretly throttle the entire cattle trade in an elaborate ream of red tape or too many formalities. अब देखा जाए भाई, तो जहां पर कैटल की बिक्री और खरीदारी होती है वहां पर मतलब जैसे जिस तरीके से यहां पर दिया गया है लिखा पढ़ी टाइप का, ऐसा कुछ नहीं होता है. जहां पर कॉमनली कैटल, आप लोगों को शायद आप में से कुछ लोगों को पता होगा, जहां पर मवेशी खरीदे या बेचे जाते हैं वहां पर इतनी लिखा पढ़ी का टाइम नहीं होता है. ठीक है भाई. तो एनीवेज, अब देखा जाए तो जो नए रूल लेकिन बनाए गए हैं कैटल के सेल के लिए या मवेशियों के सेल के लिए या बिक्री के लिए, खरीद के लिए. फॉर एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो जो खरीदार हैं उनको बेसिकली उनको दिखाना पड़ेगा एंटी प्रूफ कि वो एग्रीकल्चरिस्ट ही हैं.
ठीक है भाई, और साथ ही में जो बेच रहा है उस पर्टिकुलर जानवर को, उसको जो है फोटो आईडी प्रूफ देकर ये रिटन डॉक्यूमेंट में साफ साफ लिखना होगा, लिखित में देना होगा कि वो जो वहां बेचने लाया है अपने मवेशियों को, तो वो उनको जो है कसाई घरों में भेजने के लिए या कसाई के हत्थे चढ़ने के लिए नहीं लाया था। ठीक है भाई, अब देखा जाए तो इतना ज्यादा यहां पर ये अजीबो गरीब रूल बनाए गए हैं, तो क्या चुप्पे चुप्पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो बहुत सारी फॉर्मेलिटीज लाना चाह रही है एक सिंपल से सेल और बाइंग ऑफ ऑफ कैटल में भी। Okay, so the thing is that there are very strange or awkward rules, by the way, which have been framed for the selling and buying of cattle. For instance, the buyers must verify, they have to furnish details that they are agriculturists, and the seller of cattle must furnish photo ID proof and written declarations that they have bought the cattle, by the way, they have bought not for any kind of slaughtering or killing of the animals. And such rules actually makes person wonder whether the objective is to secretly or quietly increase the in fact put the entire cattle trade in an elaborate realm of red tapeism or too many formalities. I hope इतना दिमाग में बढ़िया से आपके बैठ गया होगा. Now, is the ban on the sale of cattle for slaughter in animal markets intended to act indirectly as an absolute ban? तो क्या देखा जाए तो जो यहाँ पर जानवरों को काटने के लिए या उनको मारने के लिए या बेसिकली कह सकते हैं आप उनको मतलब जो है स्लॉटरिंग या किलिंग के लिए, जो एनिमल का मार्केट में ऐसा नहीं होना चाहिए, इस पे जो बैन लगाया गया है, क्या ये इनडायरेक्टली देखा जाए तो संपूर्ण रूप से बैन है और क्या यह हमेशा ऐसा रहने वाला है? So, is the ban on the sale of cattle for slaughtering or killing, in animal markets intended to act indirectly as an absolute? And my dear friends, कि जितना भी यहाँ पर लिखा था, ये आपको समझ में आ गया होगा ना? Some people are complaining regarding buffering. So, well, if there's a problem, my dear friends, I'm pretty sure that our people will take care of it and they'll handle it as well. Now, anyways, अब देखा जाए भाई, सो नाउ माय डियर फ्रेंड्स, आई होप कि जो समझाया गया है वो आपके दिमाग में बैठ गया होगा. अगर बैठ गया है तो आप लिख सकते हैं बसला सर. नाउ लेट्स टेक अ लुक एट क्वेश्चन नंबर 2. सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अकॉर्डिंग टू द पैसेज? अब देखा जाए भाई तो इन तीन स्टेटमेंट में से कौन से सत्य है पैसेज के हिसाब से? स्टेटमेंट ए, बी और सी. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. 30 seconds guys, hurry up. Tell me quickly, what's the answer? Hurry up guys, 20 seconds more left. Quickly, what's the answer? हर कोई जवाब दे रहा है, मैं उम्मीद कर रहा हूं, बिकॉज सिर्फ 10 सेकेंड रह गए गाइस. कम ऑन, आई वांट एवरीवन टू आंसर. ओके, सो it's 3, 2, 1. टाइम्स अप. ओके, अब देखो स्टेटमेंट ए में दिया हुआ है, बायर्स मस्ट वेरीफाई दे आर एग्रीकल्चरिस्ट. यस, दिस वाज रिटन इन द स्लाइड, सो स्टेटमेंट ए इज ट्रू. Now statement B is the ban on the sale of cattle for slaughter in animal markets intended to act indirectly as an absolutely temporary ban? Well, absolutely temporary ban तो नहीं कहा गया था, so statement B is not true my dear friends. B नहीं होगा आंसर में. अब देखा जाए तो सी में दिया हुआ है, इट इज एविडेंट और क्लियर दैट कैटल, अ कैटेगरी दैट इंक्लूड्स काउज, बफलोज, बुल्स एंड कैमल्स, कम अंडर अ स्ल्यू ऑफ स्पेशल रिस्ट्रिक्शंस. यस माय डियर फ्रेंड्स, ऐसा कुछ कहा गया था प्रीवियस स्लाइड में. सो दैट मींस माय डियर फ्रेंड्स, ऑल दोज ऑफ यू हु चोज ऑप्शन नंबर 5 ओनली ए एंड सी, you have done a good job because that is the correct answer. And I hope my dear friends, with this particular answer your score would have reached 2 on 2 for sure. और वो सभी लोग जो हमारे साथ हाल ही में जुड़े हैं उनका स्कोर भी अच्छा जा रहा होगा. So that was all from this particular article my dear friends. I hope that you use the free Hindu editorial PDF link that we have provided you in the description box, and we'll also provide it in the comment section. Use that, read this particular editorial article, and after you read it, after you go through it, summarize it and send me the summary at saurabh.day@adda247.com. Now let's take a look at the other article, and here comes the next one. So the other article is Teme in trouble. Now who is this Teme? What is this Teme? Well, let's take a look at the next one. See, ever since the unpopular Michael Temer
Michael Temer took over as the president of Brazil after the controversial impeachment or removal of Dilma Rousseff. Clearly, it was only a matter of time before another corruption scandal surfaced in the country. अब देखा जाए भाई तो प्रेसिडेंट ऑफ ब्राजील, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ ब्राजील डिल्मा रोसेफ के हटने के बाद या इनके इम्पीचमेंट के बाद जब कम जाने माने मिशेल टेमेर बेसिकली जब ये प्रेसिडेंट बने ब्राजील की, तो ये उम्मीद की जा रही थी कि बहुत जल्द जो है एक और पॉलिटिकल स्कैम या करप्शन स्कैंडल जो है सामने आने ही वाला है, क्योंकि इनकी जो अपनी छवि है वो बहुत अच्छी नहीं थी. Now, Mr. Temer formally succeeded Ms. Rousseff in August 2016 by virtue of being the vice president and leading the center-right Brazilian Democratic Movement Party, a crucial part of the ruling coalition when it came to power in 2014. अब देखा जाए भाई तो जब मिस रूसेफ को हटाया गया था अगस्त 2016 में, तो क्योंकि मिस्टर टेमेर जो थे ये वाइस प्रेसिडेंट थे अपनी, बेसिकली वहां पर देखा जाए ये वाइस प्रेसिडेंट थे उस कंट्री के, ब्राजील के, तो इसीलिए जो है ये इमीडिएटली बन जाते हैं वहां पर अल्टीमेटली उस देश के प्रेसिडेंट. एंड बाय द वे इनकी जो पार्टी थी वो रूलिंग कोलिशन का हिस्सा थी 2014 से, जब से ये लोग इलेक्शन जीत के आए थे. So the thing is, if we summarize the entire situation, now ever since the less popular Michel Temer took over as the president of Brazil after the controversial impeachment or removal of Dilma Rousseff, it was very clear, it was only a matter of time before another corruption scandal, came to the fore or, surfaced in the country. And Mr. Temer, by the way, who formally succeeded Ms. Rousseff in August 2016 because he was the vice president. So after the impeachment of the president, obviously the VP or the vice president would take over. And you know what? He belongs to the center-right Brazilian Democratic Movement Party, or PMDB, which is actually a very important part of the ruling coalition which won the elections and came to power in 2014 in Brazil. Now, while the impeachment motion while the impeachment motion, let's just say, brought Ms. Rousseff down, many leaders in PMDB were already embroiled or entangled in the cases of corruption, including the then House Speaker, Eduardo Cunha, who led the motion. इन लोगों के नाम बड़े अजीबो-गरीब किस्म के हैं यार. अब देखा जाए भाई तो जिस टाइम पे जो है अगस्त में जिस टाइम पे ब्राजीलियन प्रेसिडेंट मिस रोसेफ को जो है इम्पीच किया गया था, उनको जब हटाया गया था, उस टाइम ये PMDB, क्योंकि ये उन्हीं की पार्टी थी वैसे, तो ये PMDB के बहुत सारे दूसरे भी नेता थे जो कि एकदम फंसे हुए थे करप्शन केसेस में, और साथ ही में जो उस टाइम के जो हाउस के स्पीकर थे, ठीक है भाई, जिन्होंने मिस रोसेफ का इम्पीचमेंट मोशन जो है लीड किया था, तो खैर वो जो हाउस के स्पीकर थे एडवर्ड कुना, उनके खिलाफ भी बहुत सारे करप्शन केसेस चल रहे थे. सो व्हेन दिस एंटायर एपिसोड ऑफ द इम्पीचमेंट ऑफ मिस रोसेफ, व्हेन इट वाज डन, व्हेन द मोशन वाज ब्रॉट, बाय द वे, मेनी लीडर्स इन द पार्टी ऑफ मिस रोसेफ, दैट इज योर PMDB, वर ऑलरेडी एंटैंगल्ड इन केसेस ऑफ करप्शन, इंक्लूडिंग द देन हाउस स्पीकर एडवर्ड कुना, who was actually, in fact, who led the motion of impeachment against Ms. Rousseff. I hope इतना दिमाग में बैठ गया आपके. Now, well, Ms. Cunha was indicted or accused. Okay, sorry, Mr. Cunha, he's a man, by the way, so sorry about that. Now, Mr. Cunha was indicted or accused in the Operation Car Wash scandal in May 2016 involving the state-owned oil company Petrobras, and later suspended as Speaker by the Supreme Court over allegations ranging from intimidation or bullying of members, legislature, and obstruction of investigation against himself. अब देखा जाए भाई तो ये कूना जो भाई साहब थे, जो वहाँ का मतलब कुआं नहीं है, ये हाउस, ये स्पीकर थे, कुआं मत समझना, कूना है. एनीवेज, तो ये जो कूना भाई साहब थे भाई, इन पे इल्जाम लगा था कि ये ऑपरेशन कार वॉश के स्कैंडल में ये जो है फंसे हुए हैं, मई 2016 में आया था, और बेसिकली देखा जाए जिसमें कि जो वहाँ की जो ब्राजीलियन ओन्ड ऑयल कंपनी पेट्रोब्रास है वो भी इन्वॉल्व थी. और बाद में देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ ब्राजील ने स्पीकर को वहाँ के जो है सस्पेंड कर दिया था, क्योंकि अब देखा जाए तो क्योंकि ये दोषी पाए गए थे ऑफ बुलिंग ऑफ मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेशन, यानी कि जो बाकी नेता लोग थे उनको जो है उनके साथ ये दादागिरी कर रहे थे, और साथ ही में इनके खिलाफ जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा था केसेस में, उनको ये रोकने की कोशिश कर रहे थे. सो मिस्टर कूना वाज एक्चुअली
know, he was an accused in the Operation Car Wash scandal of in that actually, you know, emerged in May 2016, which involved the Brazilian state-owned oil company Petrobras, and you know, he was later suspended as speaker by the Supreme Court of Brazil over allegations ranging from intimidation or bullying. Okay, over allegation, not proved, but yes, allegation of bullying of members of the legislature and also obstructing, you know, or obstructing the investigations against himself. So I hope, my dear friends, इतना दिमाग में अच्छे से बैठ गया होगा. अगर बैठ गया है तो आप लिख सकते हो बोसेगेचे सर. अगर आप लिखेंगे बोसेगेचे सर, फिर हम आगे बढ़ेंगे. And bosegeche sir, let's take a look at question number 3, which is going to be a Royal Rumble, Para Jumble, my dear friends. Yes, so that's an 8-sentencer you got there. Solve it quickly. I'm going to give you 120 seconds. Your time starts now. Hurry up, guys. Come on. $100 seconds left. Come on, guys, solve it. Just 90 seconds left. हर किसी को arrange करना है. Come on, guys. Everyone, try it. $75 seconds left, guys. I hope you are solving it. Come on, guys, quickly. Okay, just 60 seconds left. I hope आधा solve हो चुका है अब तक. Come on, guys. Last 45 seconds. Everyone, come on. Just 30 seconds left, guys. उम्मीद करता हूं सबने सॉल्व कर लिया है, वरना कोई बात नहीं, keep on trying. Come on, guys. जितना सॉल्व कर पाओ उतना सॉल्व करो, but solve it. Last 15 seconds left, guys. Hurry up, come on. Last 5, guys. Hurry up, come on. 3, 2, 1, time's up. So, उम्मीद करता हूं कि आपने ये जो 8 सेंटेंसर वाला रीअरेंजमेंट था, इसको बढ़िया से रीअरेंज कर लिया होगा. Now let's take a look at the correct arrangement. Well, now see, the correct arrangement was HEGDFCAB. So the correct arrangement was HEGDFCAB. Okay, एक बार फिर से जो सही arrangement था वो था HEGDFCD. Okay, CAB. Well, I hope, my dear friends, कि आप लोग इसको ढंग से अरेंज कर पाए होंगे. Now let's take a look at this. Now see, ever since the unpopular Michel Temer took over as president of Brazil after the controversial impeachment of Dilma Rousseff, clearly it was only a matter of time before another corruption scandal surfaced in the country. Mr. Temer formally succeeded Ms. Rousseff in August 2016 by virtue of being the vice president and leading the center-right Brazilian Democratic Movement Party, PMDB, a crucial part of the ruling coalition when it came to power in 2014, while the impeachment motion brought Ms. Rousseff down. Many leaders in the PMDB were already embroiled in cases of corruption, including the then House Speaker Eduardo Cunha, who led the motion. So I hope, my dear friends, कि ये जो पूरा order था आपने ढंग से arrange कर दिया होगा, and you would have got 1 mark for sure. All those of you who were able to arrange 4 sentences of this one, you can give yourselves half marks. ठीक है भाई, तो जो भी 4 sentence बना पाया था, आप अपने आप को और सही से बना पाया था, आप अपने आप को आधा मार्क दे सकते हैं. But I hope, my dear friends, that most of you would have scored 3 of 3 for sure. And if it's not like that, कोई बात नहीं भाई, even 2 of 3 is also nice score. उम्मीद करता हूं जो लोग हाल ही में जुड़े हैं वो लोग बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं और वो लोग बढ़िया एक्यूरेसी के साथ काम भी कर रहे हैं. Now let's take a look at the next one, and here comes the next part of the article. So 5 months later,
he was arrested, this particular speaker by the way, he was arrested for hiding money received from bribes in offshore or foreign accounts when audio tapes surfaced or emerged this month showing Mr. the present president of Brazil, who was already under investigation for corruption, discussing the payment of bribes with Mr. Kuna. It was hardly a shock. अब देखा जाए भाई तो 5 महीने लेटर, यानी 5 महीने बाद में, देखो पहले ही स्पीकर को जो है वहां के सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया था अलग अलग इल्जामात की वजह से। फिर देखा जाए भाई उनको बेसिकली जो स्पीकर थे उनको हाल ही में उनको 5 महीने बाद, मतलब हटाने के 5 महीने बाद जो है उनको अरेस्ट किया गया था। क्यों? क्योंकि उनको दोषी पाया गया था बेसिकली फॉरेन अकाउंट्स में पैसे छुपाने के लिए, जो कि उनको शायद ब्राइब्स के फॉर्म में मिले थे। अब देखा जाए भाई तो हाल ही में इसी महीने जो है कुछ ऑडियो टेप्स निकल के सामने आई हैं जहां पर जो है जो अभी के प्रेसिडेंट है ब्राजील के मिस्टर टेमेर, वो उन ऑडियो टेप्स में बात करते हुए पाए गए हैं फॉर्मर स्पीकर मिस्टर कूना के साथ, और ये डिस्कस करते हुए पाए गए हैं कि जो ब्राइब्स है ये किसको कैसे पे करना है, और साथ ही में ये जो पूरा सिस्टम निकल के आ रहा है ये इसमें बहुत कोई शॉकिंग बात नहीं है, यू नो। सो 5 months later after that particular speaker got impeached as a speaker by the Supreme Court of Brazil, you know, that particular speaker was arrested, former speaker was arrested for hiding money received from bribes in offshore or foreign accounts. And when recently, you know, audio tapes came out, they emerged this month, you know, showing Mr. Temer, the president of Brazil, who was already under investigation for corruption, discussing the payment of bribes with Mr. Kuna, the former speaker. It was hardly a shock for anyone over there. Now, it led to street protest seeking Mr. Temer's resignation. Predictably, he has refused to resign and instead used force to quell or suppress the agitation. अब देखा जाए भाई तो ऑब्वियस है, जब ये टेप्स इमर्ज हुई, जब ये निकल के सामने आई तो इससे किसी को शॉक तो नहीं लगा, लेकिन तब भी रस्तों पे जो है बहुत बवाल हुआ। और ऑब्वियस है कि टेमेर भाई साहब के जो रेजिग्नेशन है इसके लिए बहुत तगड़ी डिमांड भी हुई, लेकिन जैसा कि प्रेडिक्टेबल है, ये जैसे हम लोग जानते ही थे, हुआ यही कि जो ये टेमेर भाई साहब थे इन्होंने जो है मना कर दिया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं, मैं कोई जो है मैं कोई रिजाइन करने वाला नहीं है, ये सब साजिश है और कुछ नहीं। और साथ ही में उन्होंने बहुत ही कह सकते हैं आप क्रूरता के साथ जो ये प्रोटेस्ट हो रहे थे उनको जो है उनके खिलाफ फोर्स इस्तेमाल करते हुए उस प्रोटेस्ट को शांत कर दिया, उसको दबा दिया, ठीक है, यू नो। सो बाय द वे मिस्टर टेमेर्स resignation demands was going up through street protest, and predictably Mr. Temer, the president of Brazil, refused to resign and instead used force to quell or suppress the agitation against him. Now, the Brazilian political class, including the ruling PMDB and the Workers' Party PT that was in power from 2003 to 2016, has been severely discredited or defamed over the past few years. अब देखा जाए भाई तो जो ब्राजीलियन पॉलिटिकल क्लास है, ठीक है भाई, फिर भले ही उसमें अभी जो रूल कर रहे हैं पीएमडीबी, चाहे इनकी बात हो या फिर बेसिकली वर्कर्स पार्टी की बात हो जो कि इसके कोलिशन पार्टनर है, बेसिकली जिसने जो है 2003 से 2016 लगभग 13 साल तक राज किया है भाई, देखा जाए तो ये इन दोनों के साथ देखा जाए तो हमेशा बेइज्जती ही इन्होंने करवाई है ब्राजीलियन पॉलिटिकल क्लास की पिछले कुछ सालों में, यू नो। सो द ब्राजीलियन पॉलिटिकल क्लास व्हिच इंक्लूड्स द प्रेजेंट रूलिंग पीएमडीबी एंड आल्सो द वर्कर्स पार्टी पीटी व्हिच वाज इन पावर फ्रॉम 2003 to 2016, दैट्स अ पीरियड ऑफ 13 years by the way, you know the thing is that their acts has actually caused, you know, severe defamation for the Brazilian political class over the past few years. Now, Ms. Rousseff's ouster is clearly a case of the ruling elite finding a scapegoat, sacrificed by the way, to escape further investigation into mass graft. अब देखा जाए भाई तो जिस तरीके से फॉर्मर ब्राजीलियन प्रेसिडेंट मिस डिल्मा रूसेफ को जो है बाहर निकाला गया था या बेसिकली जो है उनको मतलब हटा दिया गया था प्रेसिडेंटशिप से, तो ये सिर्फ बिल्कुल जो है एब्सोल्युटली एक बलि के बकरे जैसा सिनेरियो था, जहां पर जो ब्राजील का जो रूलिंग क्लास था उसने एक बलि का बकरा दे दिया ताकि उसके चक्कर में और कोई ना फंसे, यू नो। सो मिस रूसेफ्स ouster or removal or impeachment as president was, you know, that was clearly or evidently a case of the ruling elite political class finding a scapegoat or a sacrifice to escape further investigation into mass graft. Now,
The PT, by the way, that is the Workers' Party, had successfully engendered or caused a social democratic regime that combined free market policies during the commodities boom with welfare measures that helped raise many Brazilians out of poverty. अब देखा जाए भाई तो ये जो आपका वर्कर्स पार्टी है, ठीक है भाई, जिसने कि 2003 से 2017 तक राज किया था, इन्होंने जो है कह सकते हैं एक सोशल डेमोक्रेटिक रिजाइम के जरिए जो है फ्री मार्केट पॉलिसीज को कंबाइन कर दिया था कमोडिटीज बूम के साथ साथ, और बहुत सारे वेलफेयर मेजर्स भी लिए थे, जिससे कि बहुत सारे ब्राजीलियंस जो कि काफी पॉवर्टी लाइन के नीचे थे वो लोग पॉवर्टी लाइन के ऊपर आ गए थे, वो लोग गरीबी की रेखा से ऊपर आ गए थे उनके देश में, यू नो. सो दिस पर्टिकुलर पीटी और द वर्कर्स पार्टी, यू नो, it had caused a social democratic regime that actually combined free market policies during the commodities boom with welfare measures that actually helped raise, you know, a lot of Brazilians out of poverty. Now, my dear friends, let's take a look at the next question which is coming up for you, and here it is. It's a tough one. Now, what's the suitable title for the passage? क्या लगता है आपको इन ऑप्शंस में से जो suitable title है इस पैसेज के लिए वो क्या होने वाला है? You got 30 seconds. Your time starts now. Hurry up, guys. Come on. Tell me quickly. Okay. Now, see, guys, just 20 seconds left for your answer. So, hurry up. Come on. Last 10 seconds left. I hope everyone is answering. मैं देख भी सकता हूं यहां पर मुझे बार दिख रही है, लगातार लोग आंसर दिए जा रहे हैं और ज्यादातर लोग सही जवाब दे भी रहे हैं. Come on, guys. So it's 3, 2, 1. Time's up. Now see. Well, what's the suitable title for the passage? In option 1 is political scandals. Yes, they do form a part of this particular article, but they are not the only form. In fact, plus it should be a little more direct towards which kind of political scandal or whose political scandal are we talking about. Now, option 2 is Brazil, a land of politics. Well, that will be really strange, you know. Now, option 3 is Brazil in shambles. In a way, it is in shambles, you know. Then political circus in Brazil. अब देखा जाए तो काफी circus चल भी रहा है. Well, देखा जाए, you know, something really funny is going on in Brazil, by the way. But option number 5 says political corruption in Brazil. Now, this is the exact answer, and this is the absolute option which immediately removes all the other one, because this particular heading, you know, this particular option, you know, it captures the crux or the theme of the article very well. Now, by the way, this is not all that was given in the article. There is more in this particular article, and you can use the Hindu editorial free PDF link to go and read that particular article, you know, then understand it, and then write a summary to me at saurabh.day@adda247.com. So now, my dear friends, it's time for a very interesting vocab rapid fire quiz. So are you guys ready? And yes. Well, let's take a look at question number 5. So choose the synonym for Spain. Oh, sorry, for span, not Spain. Okay, what's synonym for span? From the options, your time starts now. 15 seconds, guys. Hurry up. What's the answer? 10 seconds left, guys. Hurry up. Last 5. And time's up. So now the thing is, see, if we talk about, let's just say we talk about compressed, now that would not be a synonym for span, you know. Concentrate would be an antonym for span, shorten would be an antonym for span, but if we talk about cover, that would be a synonym for span. So all those of you who chose B, you have done a good job. That's the correct answer. Now moving on, question number 6, guys. Hurry up. So what's the antonym for the word guys? Okay, so give me an antonym for the word guys. Your time starts now. 15 seconds. Hurry up, guys. 10 seconds left. Quickly. Last 5 seconds. Hurry up. And the time is up. Now, acha bataiye bhai. So you have to give me an antonym for the word guys. Well, the thing is, the synonym for guys would be disguise, or it would be facade, or it would be pose. But the antonym for guys would be reality. Yes, so all those of you who chose D, you gave the correct answer. Now, let's take a look at question number 7. Quickly, guys, come on. So, what's the synonym for the word surreptitiously? Now, your time starts now. Hurry up, guys, 15 seconds. Quickly, synonym. Last 10 seconds, hurry up, guys.
Just 5 seconds left. And the time is up. तो भाई जो समय देखो वो समाप्त हो जाता है. Now see, the antonym for the word surreptitiously would be, let's just say, openly or publicly, or clearly. But the synonym would be stealthily. Okay, अब देखो इसका मतलब होता है in a hidden manner, guys. So that's why all those of you who chose option C, you did a good job because that's the correct answer. So now it is time for the ultimate question, or question number 8. And what is that? Let's take a look. So what's the antonym for the word intimidation, my dear friends? You got 30 seconds times. Okay, you got 15 seconds time starts now. Hurry up, come on. 10 seconds left. Hurry up. What's the answer? Last 5. And the time is up. Okay. तो भाई देखा जाए तो इंटिमिडेशन में अगर हम बात करें synonyms की, now the synonyms of intimidation would be coercion or frightening or threatening, but the antonym has to be request. That is option A, my dear friends. So I hope that you guys would have scored a perfect 8 of 8 for sure. And if it's not 8 of 8, even 6 on 8 or around, or above is also a very beautiful score. And all those of you who joined us late, I hope that your accuracy would have been above 70% for sure. Now, let's take a look at the other very important articles of the Hindu editorial of today. Now see, the other articles for review are misreading the tea leaves, alright, then perception and the reality, then the cinema of Punjab, and then about a reclusive icon. Now what are all of these articles about? For that, you'll have to use the free Hindu editorial PDF link and then go through these articles and take a look at them. I hope, my dear friends, that you enjoyed a lot in today's Hindu editorial analysis and you learned a lot as well. Well, with the same thing, we'll be back tomorrow. Till then, take care of yourself, and hey, remember that with Adda247, government job is right there in your pocket, and now even SSC power is there to prove the same. So good night, Shubh Ratri, and Shabba Khair. Go to YouTube. I'm Gopal Anand, the banker's Adda.com capsule maker. The same capsule which helps you out in getting good scores in general awareness portion of different examinations like SBI PO and IBPS. To help you out in the general awareness portion, I am coming with my e-learning course in which I will be teaching you banking awareness and static awareness of Indian states and union territories. Hello students, I'm Swati and I've been helping you out in preparing computer awareness for various banking examinations. Yes, computer is a very vast subject, and to help you out in understanding what to study and how to score, I've created an e-learning program for computers. We all are worried about reasoning, the level of questions, and moreover the surprises. So here I have compiled a package especially for banking reasoning, which will deal with every level from basics to higher levels. We have devised a unique e-learning courseware for you to overcome all the hurdles and crack your upcoming examinations. This courseware does not only consist of the previous year asked questions, but also the questions based on new patterns. Quantitative aptitude. Difficult to understand so many concepts? Let's make it easy. Here I am, Sumit Verma. I have designed a course in which you will be able to understand all the concepts and all the types of questions. The Bank Power module includes 100+ hours of high-quality videos by our expert faculties, tricks and shortcuts to solve questions in a faster way, ebooks for subjects Maths, English, Reasoning, General Awareness and Computers, online test series with all India ranking and detailed solutions, online and face-to-face doubt clearing sessions, available preloaded on a tablet or SD card. Go to youtube.com and subscribe to the Adda247 channel. Scroll through videos and playlists. To get notification on new videos uploaded, press the bell button. Adda247, government job in your pocket.